Sementics 1.5, Chapter number 1, 5th topic, Semantics in other disciplines. So, we discussed earlier about some aspects of semantics, and now this is the last topic of this chapter, semantics in other disciplines. In this topic, in this chapter, we will learn about different perspectives of semantics and the communication system as the information and some factors of communication system. So first of all comes toward the different perspectives of semantics, or different, you can see disciplines, how different disciplines linked or followed semantics. So we have three major perspectives: anthropologist perspective, psychologist perspective, and philosophical perspective. So first of all, anthropological perspective. What is anthropologist perspective about you can say semantics? Semantics, according to the anthropologist, deal with the culture and behavioral patterns of the people they study. The anthropologist studied different people and the language, and they said that semantics deals with the culture and the behavioral patterns, matlab ke how the people are behaving in different context and different cultures. That is what semantic deal with according to the anthropologist. वो ये कहा करते थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी टर्म यूज़ हो रही है, कौन सी स्पेसिफाइड टर्म किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है, दैट शुड बी द मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस. सो ये हमारे पास आ गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट. व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट थिंक अबाउट सेमेंटिक्स? साइकोलॉजिस्ट ये कहते थे कि जो सेमेंटिक्स है, इट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड द परसेप्शन, कि हाउ द साउंड और द वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड और प्रोनाउंस्ड एंड हाउ दे आर perceived. A person, if two people are having conversation, one person is you can say pronouncing, or you can say one person is speaking and producing the words while the other person is perceiving, other person is getting the point. So how the words are produced and how the words are pronounced and how they are perceived, this is what semantics in psychological perspective deals with. For example, let us take an example of dog and food. For example, अगर हमारे पास एक dog है and we use a buzzer sound, and every time on the buzzer sound you give him food, आप उसको खाना देते हैं. जब भी आप बजर साउंड यूज़ करते हैं, वो डॉग आपके पास आता है और आप उसको खाना देते हैं, ठीक है. तो आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट्स क्या होगा कि ही विल स्टार्ट कंसीडरिंग द बजर साउंड एज हिज मील कॉल, as his call for the meal. कि उसको लगेगा whenever he used to hear this buzzer sound, he will get something to eat, he will get a food. So how the sound is produced and how the sound is perceived, this deals with the psychological perspective. कि वो जो dog था उसकी psychological perspective में ये चीज़ आ गई कि whenever a buzzer sound is heard by him, he will definitely consider it as a call for his meal. तो उसके साइकोलॉजी की अकॉर्डिंग द बजर साउंड कॉल्स फॉर द मील, और दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजी डील्स विद. कि जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस हुई, हमने सिर्फ एक बजर साउंड प्रोड्यूस की, लेकिन डॉग ने उसको खाने के लिए मतलब उसकी कॉल कंसीडर किया. प्रोडक्शन एंड परसेप्शन. नेक्स्ट वी हैव द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव. फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में फिलोसोफर्स का क्या कहना था कि इफ़ यू स्टार्ट डीलिंग विद द कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कॉन्वर्सेशन, देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. और उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी: प्रीसपोजिशन, इम्प्लीकेचर एंड स्पीच एक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पीच एक्ट? स्पीच एक्ट होता है कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू किसी इंसान को कुछ सर्टन एक्शंस परफॉर्म करने का बोल रहे हैं, एंड ही इज़ परफॉर्मिंग दोज एक्शंस. दैट इज़ व्हाट स्पीच एक्ट डील विद. फॉर एग्जांपल, you can say you are at an authority, okay? You are saying your subordinate to close the door. You will say, go and shut the door, and he will definitely get up, go and shut the door.
that is what you used your speech to perform something. You didn't go and close the door, but on your order the door got closed. आपके ऑर्डर पे डोर बंद हो गया. दैट इज़ वट योर स्पीच वर्क्स फॉर. योर स्पीच कैन ऑल्सो परफॉर्म समथिंग एंड दैट इज़ स्पीच एक्ट. इम्प्लीकेचर. इम्प्लीकेचर मीन्स कि आप एक हिडन वर्ड्स में बात कर रहे हैं और आपका जो हिडन मीनिंग है वो भी सामने वाला समझ जाता है. मतलब कि आप एक बात कर रहे हैं एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ easily capable of decoding what you are trying to convey in that specific statement. For example, we can say that someone is asked about his neighborhood, about his attitude being a neighbor. ठीक है, तो वो आगे से रिप्लाई करता है कि I am, you can say, my neighbors don't even realize that I exist. I'm such a silent kind of person that my neighbors don't even know that I exist. ये बात की गई, लेकिन इसमें हिडन मीनिंग क्या था? हिडन मीनिंग ये था कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से दैट आई एम अ वेरी गुड नेबर. That I am a very good neighbor. My neighbors do not get disturbed or upset or irritated by me. तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक simple statement आई and we got the hidden meaning. That is what implicature is. Presuppositions. Presuppositions means कि you got some conversation or you got someone talking to the other person and he is saying something and you actually presupposed something. For example, if a person says to his friend, when will you stop beating your wife? Then the person is actually saying the other person to stop beating his wife, and we, the third person who are listening to the conversation, can easily presuppose that he the second person beats his wife. तो ये हमारी presuppositions हैं कि हम बाद में से मीनिंग को डिराइव कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, रिडंडेंसी लेवल एंड द नॉइज. रिडंडेंसी लेवल क्या होता है? रिडंडेंसी लेवल मीन्स दैट सर्टेन parts of the messages that can be removed without removing the information. समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हम अपनी एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं या अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि हमारा मीनिंग कन्वे हो जाने के बावजूद वी जस्ट कीप ऑन गिविंग द एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स. तो रिडंडेंसी किस चीज़ को डील करती है कि आप वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड कर दें, इवन देन यू विल बी एबल टू कन्वे योर कंप्लीट मीनिंग. So redundancy deals with this. And now come to the noise. Noise क्या है? Basically noise हमारे पास होता है कि something that interferes the communication. कि कोई भी चीज़ जो आपकी communication को disturb करेगी, that will be considered as noise. Simply referred as noise, but in semantics it can be said as the discrepancies between the speaker and the hearer's understanding. कि speaker और hearer की understanding के बीच में जो बैरियर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज. हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के फैक्टर्स पढ़े. तो व्हाट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम और हाउ कैन अ कम्युनिकेशन सिस्टम बी कॉल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम? तो इसके लिए एफिशिएंसी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ऑल्सो बी जज्ड और इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाउ क्लियरली द इंफॉर्मेशन इज़ पोर्ट्रेड और इंफॉर्मेशन इज़ गिवन. मतलब कि उसका रिडंडेंसी लेवल क्या है, उसका नॉइज़ क्या है और वो सारी चीज़ें क्या है, एंड हाउ मच क्लियरली द मीनिंग इज़ कन्वेड. सो हियर 1.5 ends and along with 1.5 the whole chapter ends. Thank you for watching.